So, good evening to all the viewers. We at Osteoporosis and Arthritis Care welcome you for today's session. Today's session is related to management of osteoporosis. If I say osteoporosis is a condition where bones become weak and fragile and increase the risk of fractures. So, you will surprised to know that over 50 million Indians are estimated to be either osteoporotic or have low bone mass. 1 in 2 women and 1 in 4 men over age 50 are likely to suffer osteoporosis-related fracture. Or maybe Indian women tend to develop osteoporosis 10-20 years earlier than Western women. And as well as one more info that the vitamin D deficiency affects up to 70 to 90% of Indian population. So without wasting any time, first of all, today our objective to discussing the management of osteoporosis, we are joined by one of the brilliant Dr. Professor Sunil Devangan, the senior joint replacement surgeon, and he is the one super specialist and expert surgeon who is practicing total knee and hip replacement surgeons in Raipur as well as Chhattisgarh state all over. Doctor had an experience of more than 20 years, and beautiful part is that successfully performed more than 15,000 joint replacement surgeries. So it will be benefit for all of us to know from the specialist, know from the expertise. So join us welcoming our distinguished guest, Dr. Sunil Devangan, as a professional. As we embark on this enriching conversation for your health and well-being. So welcome to the program, Dr. Sunil. So please, stage up to you. Thank you, Gupta ji, and thanks to Jaidas first for inviting me to this platform to provide the awareness and to discuss this such a hidden kind of a pathology that is known as osteoporosis. So we will go through the basic nitty-gritty of what is osteoporosis and how exactly we are facing the problem. So hope my screen is visible. You can see the presentation. Just confirm me. Yes. Fine. Okay. So first of all, the topic is definitely management of osteoporosis, but we must know what exactly this is. So we should know what is osteoporosis. So osteoporosis is simple. If we bifurcate the terminology, that osteo means bone and porosis is a that is a porous bone. Basically, it's a, I would say, degradation or simply a loosening or kamjor hona jisko hum kehte hain. I will use both of native language also in English also. So if any problem, you can raise a question. So this is typically characterized by a very poor bone mass. मतलब हड्डियां कमजोर होती है, deterioration होता है. And what exactly why it means? The bone becomes more porous. Normally, if we see a bone, it's a solid like a cement and a concrete. And gradually, with an aging process, it becomes the density becomes gradually low, and the porosity means inside there are porous air areas. I would say the porosity that increases, and that's why the overall risk of fracture increases. So as the density decreases, the risk increases. So the loss of bone occurs silently. This is a biological process, and it's a progressive process. And then symptom, what you note is just like in a hypertension. No one knows that your BP is increased, but whenever you see that there is a blood pressure creates any complication like a syncope or any CVA suddenly, or you might be feeling headache, then only you are able to know that your BP is increased. In the same manner, the osteoporosis is such a silent disease. Unless it produces a complication like a minor or macro fracture in any of incidents, then only you are able to know that there is a osteoporosis. But if we see that 1 in 3 and 1 in female, means every third female and every eighth male is in India is suffering from this silent disease. So let's see in overview what it is characterized by. The osteoporosis is a low bone density. Definitely, that's the meaning of the same. It is a deterioration of the bone tissue quality, and finally, the overall that micro architecture which the bone is made up of gradually disrupted, and it results a bone compromise strength. So that strength is poorly compromised, and finally, it results in a fracture of
that bone. So that's a, I would say that low bone density deteriorates the bone tissue and microarchitecture is disturbed, and finally that compromises the bone strength and results in a fracture. So that kind of a thing happens. So if we define the osteoporosis, that definition can be made by the technical thing, and that technical thing can achieved by so-called bone mineral density, what we known as a BMD simple. So WHO has given a diagnostic classification. Once you take your BMD, so it produces a T score through a specific machine, what we are known as a DEXA scan. So DEXA scans the whole body and gives you the results of hip, lumbar spine, wrist joint, and whole body. So we measure the BMD at hip joint, lumbar spine, and also the wrist joint, because these three are the very critical zones where we calculate the T score. So if we see what is the normal and what is abnormal, so there is a normal T score is less than minus 1.0, means if you are above minus 1.0 towards 0, you are very normal and healthy for your age. When you are below minus 2.5, means beyond, if your value is 2.6 minus 2.7, then you are osteoporotic. In between, if the value is there, means minus 1 to minus 2.5, then you are osteopenic, means you are moving towards the osteoporosis. So this is the criteria, because this criteria will define how, means treatment modality we will implicate on the patients clinically. So global burden, if you will see there are red lines. So in the overall world map, you can see there is an orange map and there is a green. So green is definitely always, as we know in the signal, is a very safe zone. But when we see a orange zone, that is a dangerous, means orange is towards the red. So see that India and the whole continent, India, Asia specifically, if we see, that is in a red zone. So as per WHO, so the affection is on the increasing side, because as we are growing toward the more population, the number of male or female, the aged population is going to increase. That's why our overall geriatric population is increasing. So the ratio is also increasing. So these are the data where we can see the population of men and women suggesting approximately 500 million men and women are affected. So by 2050, that overall number is going to increase. How much increase? So the incidence, they have speculative figures. They are approximately in 1990, whatever numbers were. So in the next 60 years, the ratio is going to 3 times and 4 times. So why this risk are increasing? Because geriatric populations are increasing. So worldwide, again, I told you, over a period of age 50, because 50 is the criteria where we can think of starting of osteoporosis. So on that ground, we can see there are 1/3 women and 1/5 men. They are experiencing osteoporotic fractures. So in global burden, again, we can see where, as we have already discussed, because why females are more prone. In coming slides, we will discuss, and men are less prone because there are hormonal architecture biologically, they are more safe in the main, and they are very less, I would say, at a higher risk on a female. So osteoporosis to be estimated to affect 200 million women's worldwide. So the load is too much. So this is a silent disease, and overall it affects the huge economy on the health sector. So in Asia Pacific region, if we say with this graph, by 2050, around 1.3 billion in the Asia will be aged over 60, and 1/4 of billion will be aged over a period of 80, means the age will be 80 plus. So see that 1.3 billion and around zero point 0.4 billion, sorry, 0.25 billion. So that overall load is too much. So half of the hip fracture, most of the that trivial fall or anything, that will occur in Asia by 2050. So overall, this is a simple data. Might be the data is not, means we will not able to quantify this, but when
it comes to the practice being an orthopedic surgeon, we can see almost, as my practice is as a joint replacement surgeon, as a geriatric orthopedician, as a rheumatologist, I can see almost, I would say, in and around those who are osteoarthritic patient or arthritic patient. Actually, I am not facing much of a osteoporotic fracture, because when fracture comes, it normally goes to an simple orthopedic surgeon, I would say a trauma surgeon. So if we calculate these patients in a trauma basis, means what is the percentage of your patient who are coming to you with a osteoporotic fracture are definitely hip fracture, spine fracture, and risk factors are very, very high. So in 2000, if we see, almost 10% people were aged 65 and over. This number is expected to tripled by, means as our age expectancy is increasing, our overall socio-economic status is increasing. So number of geriatric population, this is again the same figure is showing, this number is going to be around 28%. So it will be 4 times by 2100, means in coming next 75 years, it will be almost half of the population will be geriatric population. So what will be the burden? Because if we see the burden, India is approximately 230 billion over the 50 years. Most of the data of the prevalence of osteoporosis among the women in India comes from the studies conducted in a very small group, spread across the country. So the estimated means estimates from 2015 has suggested 20% of 230 million Indian women over age of 50 has osteoporosis. So in general, if this we do not go through the quantifying data, I can simply say the female over 50 to 45 years even, they are having more than 50% patients are osteoporotic, and even in a practice we can correlate that data. So the prevalence of osteoporosis is 8 to 62%. See that the data is telling. So in my practice, I would say around 40 to 45 age group starts showing that osteoporosis in a different age group. So the prevalence of osteoporosis in male is as compared to female are less. So you can say the upper limit is 25% only in the males. So exploring the data number of hip fracture every would be more than, see that almost 5 lakhs with a female male ratio is a 3 to 1 ratio. And even I would say this is, I think the female ratio would be around 5 to raise to 1 even with the data, because in practically in my cases I can see most of the females are coming with a fracture. So what are the risk factors which can see? So risk factor is anything that increases your chance of getting a disease or a fracture. Having one or more risk factor does not mean that you will be having a osteoporosis, but however, the risk factors you have, the greater your chances of developing the disease. So bone loss due to osteoporosis happens without any symptom, as I have already told you. So the only two visible sign may suggest you the osteoporosis, and that includes simply if the height loss is more than or equal to 4 centimeter, because loss of height of any equal to or 4 centimeter in any case is definitely a symptom of osteoporosis. 20% are having a risk fracture of spine. So the risk increases with your, sorry, spine. So the osteoporosis simply shows a hunchback. I would say is a dorsal kyphosis will increase, and you can see that our age group is walking just with a stooping posture. So mostly what happens, the overall spine height reduces, and that's causing the loss of height in the most of the patient. So what are the risk factor that we cannot change? Because aging factor, definitely other factor we can consider, but age we cannot reduce. Females are at a more risk. Those who are having a family history of osteoporosis, specifically those arthritic patients or having a specific genetics in the female, I can see they are on the same line with previous fracture. As your mobility decreases, so overall your consolidation of the bone also
increases, so the risk increases. So menopause is another factor which is mainly responsible for making female more prone for such kind of a disease. At the same time, few medication, specifically antipsychotics, I would say some hypertensive medicine or long-term steroids, or even lack of nutrition, I would say, including some nutritional deficiency also adds to these factors. So these are non-modifiable factors. And when it's coming to a management, definitely this what we are discussing here is a pharmacological management. But other than pharmacological management, there are definitely different issues which we should address. So if we consider the management of osteoporosis, there are two factors. One is a formation and another is a resorption. So in formation, the formative activity means the creative activity of a bone. So we have to make a bone that is fairly only possible with a sufficient, what we need is a hormone, and that is a definitely estrogen or testosterone, which definitely decreases with the age, specifically in the female after the menopause. But in male, testosterone also decreases. So these two natural hormone increases your osteoblastic activity, and that is well very nicely can, I could say, compensate or parallelize with the what is available as a PTH, that is teriparatide injection, that I have in my experience, I would say is a superb molecule that has to be used. Other than what I could say, we can reduce the resorption through, there are a lot of things. In menopausal females, we can use a hormone replacement therapy, even that is a HRT, calcitrol, bisphosphonate. These are basically trying to inhibit the osteoclastic activity. So thyroxine is definitely that activates the osteoclast, because thyroxine is also another component which increases your bone strengthening kind of activities, which we can say. And glucocorticoid at some level, it increases. So basically, as we have seen in a medication form, when any patient is on a long-term steroid, like any immunosuppression therapy, so glucocorticoids are mainly absorbing through the osteoclasts and activity increases. So these osteoclastic activity resorption is the second component. So Rankel, another new component, and denosumab definitely with teriparatide acts with a double-edged, I would say, a double company for prevention of osteoporosis. So one side we are forming the bones with the teriparatide, and another side we are reducing the osteoclastic activities, and thus we are managing with the both the ends. So one is a developing the bone quality, and another is a restoring and stopping at that level. It's a simply just like if you are putting a lot of money in a bank, FDs, and you're not locking it, so money will flow out of that bank. So you have to lock it through your anti-resorptive therapy. So the prevention is basically, in other forms, whenever you are using all this molecule, your basic supplement has to be sufficient, like calcium content of the food, your daily exercise, your vitamin D level, vitamin even B12 level, starting from your protein, other nutrients. These are very important. And at the same time, you, because the fracture is the most I would say a dangerous complication of this disease, so you have to be very careful about even a trivial fall, missing a step, or in any kind of a slipping has to be very carefully taken, because once you are fallen down, definitely there is a chances of any either a wrist fracture or a spine fracture or even a hip fracture. So prevention is very important. So this topic is very huge, I would say. In a very nutshell, it is very difficult for us to cover it up in a daily routine. This I have means this slide is very small to make a basic understanding of this topic. But otherwise, in my practice, I have seen I do not take not less than 30 minutes to explain any osteoporotic patient, to be very precisely, for not to land up in a complication. So I think that is sufficient to us for us to understand what is osteoporosis, and
how we can prevent it academically. But if any questions from audience or any doctors, you can ask. So I think Mr. Gupta will connect with us for any question and communications. Yes, doctor. Thanks, you rightly said कि आपको each and every patient को मतलब discuss करने में it will take time. So in on 15-20 minutes you summarized whatever the possible way. So thanks for your that we received some questions and all. So I'll take one by one. These are all very simple question. Maybe you can click on that. What can I do to avoid osteoporosis? Is something. यस, देखिए ऑस्टियोपोरोसिस अवॉइड करना जस्ट ऐसा है, समझिए कि हम एक इंश्योरेंस लेने वाले हैं, और वो इंश्योरेंस की कीमत हमको तब पता चलती है जब हमको एक एक्सीडेंट होता है कि अरे हाँ पैसा देना है। सो इन इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। मैं आई विल बी मोर ऑन हिंदी बिकॉज मे बी सम कॉमन पीपल आर Correct, ज्वाइनिंग, correct. उनको Yes, थोड़ा yes, सा correct, correct, डिफिकल्ट correct, होगा। सो correct, correct. ऑस्टियोपोरोसिस कोई बीमारी नहीं है, सीधा सीधा हम कहें। ऑस्टियोपोरोसिस को ढूंढना सिंपल है कि इट इज जस्ट लाइक कि आप एक ब्लड टेस्ट कराने गए और आपको एक ऐसी बीमारी का पता चल गया जिससे आप डर गए। सो आइडियली आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं इन जनरल डे टू डे एक्टिविटी में, मैं कहूंगा कि यदि आप 35-40 की एज क्रॉस कर रहे हैं, एंड इफ यू आर फीलिंग कि मैं थका हुआ सा हूँ, आई एम नॉट फीलिंग एनर्जेटिक, और मेरे को नींद आती है, काम में मन नहीं लगता, हल्का हल्का मीठा मीठा सा दर्द होता है, इन एनी केस फॉर फीमेल ऑल्सो एंड मेल ऑल्सो, देन डेफिनेटली आपको ये एक अलार्मिंग साइन होता है। यदि आपको कोई भी ऐसा मेडिकल प्रॉब्लम नहीं आता है जिसको यदि आप जनरल फिजिशियन से चेक करा लें, तो अब बिल्कुल से मुझे लगता है कि आप सबसे पहले अपना हीमोग्लोबिन, प्रोटीन लेवल, मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट, सॉरी लीवर फंक्शन टेस्ट के थ्रू अपना प्रोटीन लेवल, कैल्शियम, विटामिन बी 12 एंड विटामिन डी 3, यदि इन चारों का एनालिसिस आप करें तो आपको पता चल जाएगा कि आपका हीमोग्लोबिन डाउन है। बिकॉज ये सारे जो कंपोनेंट हैं आपको इंटरकनेक्टेड होते हैं, क्योंकि यदि आप न्यूट्रिशनली डाउन है तो कोई भी बीमारी, चाहे वो सर्दी खांसी हो या एक कोई दूसरी भी गंभीर बीमारी हो, आपको बहुत ज्यादा परेशान करती। तो द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज विल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर ओवरऑल एक्चुअल हेल्थ। तो यदि आपका हीमोग्लोबिन बढ़िया है, जो कि फीमेल में नॉर्मली मैंने हिंदुस्तान में देखा हुआ है कि लोग 10 को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं, आई वुड नॉट, I would say hemoglobin level for female should not be less than 12 or 13, because once you are 12 or 13 you are nutritionally very good, आपका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है। दूसरा कंपोनेंट होता है प्रोटीन। हम प्रोटीन को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते, सर्कुलेटिंग प्रोटीन जो अपनी बॉडी में होता है वो हमें दिखाता है, लेकिन यदि हम प्रोटीन इंटेक आपका शरीर में प्रॉपर नहीं, जो सिर्फ सिर्फ हम यदि कहें कि अपने वजन के हिसाब से 1 ग्राम पर केजी, और इसको फूड से कवर करना मुश्किल होता है, तो आजकल हम लोग देखते हैं ना बहुत सारे लोग प्रमोट करते हैं प्रोटीन डाइट, प्रोटीन डाइट, प्रोटीन डाइट। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सक्लूसिव प्रोटीन डाइट, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटीन रिच फूड। और सबको पता है भाई प्रोटीन के लिए क्या खाना है, दालें खानी है, आपको नट्स लेने हैं, आपको रेगुलर में यदि आप नॉन वेज हैं तो अंडा खाइए या फिर आप नॉन वेज लीजिए। बट ओवरऑल आपका प्रोटीन पोर्शन, आई वुड से यदि आप क्वांटिटी में देखेंगे तो यदि 1/3 करते हैं आप प्रोटीन कंपोनेंट को, देन इट विल बी फ्रूटफुल। अदरवाइज जो इंडियन स्टेपल फूड है उसमें भी बहुत सारी अच्छी चीजें, जैसे दाल और चावल हम मिक्स करते हैं, दाल की मात्रा काफी कम रहती है जस्ट बिकॉज ऑफ आवर अवेयरनेस। दाल हम ज्यादा नहीं खाते, 1 कटोरी दाल और चावल की मात्रा होगी 4 कटोरी। सो आई वुड से अगली बार जब भी आप खाना खाएं या कुछ करें तो आप दाल की मात्रा को 2 कटोरी कर लें, चावल को सो इक्वल कर लें। इवन मैं अपने जितने, बिकॉज आई बिलोंग टू छत्तीसगढ़, यहाँ पे स्टेपल फूड इज चावल, राइस। राइस में प्रोटीन बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है बट ओवरऑल रेशियो इज वेरी लेस। सो इसकी वजह से क्या होता है ना, लोग बहुत कम मात्रा में कहें जो फली वाली सब्जियां हैं, जैसे जिसमें बीज होते हैं, सेम है, बरबट्टी है, या फिर राजमा है, इस टाइप की चीजों को आप यदि कंबाइन करें, जो हमें दालें लेते हैं, पूरी दाल, पूरी वेराइटीज आप उसको मिक्स कर लें और दाल की क्वांटिटी अपने फूड में बढ़ाएं, सो दैट विल हेल्प यू। दूसरा कंपोनेंट जो मैं कह रहा था कि जो जैसे मैं समझाता हूँ कि आप जैसे रोटी खाते हैं, तो हम लोग देखा है मैंने बहुत लोगों को खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं तो रोटी के टुकड़े में जस्ट हम वी आर मीन पॉलिशिंग, एक स्लाइस लगा लिया सब्जी का, नहीं। मैं कहूंगा हम समोसा खाते हैं, इसका छोटा एग्जांपल दूंगा मैं आपको। समोसे में जैसे आलू भरा होता है ना, वैसा हम अपना जो अपना बाइट लेंगे, जो कौर बोलते हैं, तो रोटी में दाल और सब्जी को आप इस तरह भरें कि वो पूरा फिल हो। सो इससे रोटी की मात्रा कम हो जाएगी या चावल की मात्रा कम हो जाएगी, बट अंदर जो फिलिंग की हमने,
दाल की, राइस की, या जो हमने सब्जी ली है, सो वो आपको प्रोटीन कंटेंट बढ़ा देगा। सो नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखें अपने किचन में जब खाना बन रहा हो, तो आप जो सब्जियां बना रहे हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, तो आप जो 1 पाव आधा किलो सब्जी सपोज करो, जो मैं इन जनरल प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, कि जिसको हम बनाते हैं कि भाई न्यूक्लियर फैमिली है, 2+2 मेंबर्स हैं, तो उसमें आप 1 पाव आधा किलो सब्जी बनाते हैं, तो कल से सब्जी की मात्रा को आप और 200 ग्राम 250 ग्राम बढ़ाते चले जाइए। सो इंक्रीज योर वेजिटेबल इंटेक इन द फॉर्म ऑफ बीन्स काइंड ऑफ फूड, एंड दाल बढ़ा दीजिए आप उसमें। फिर हम आते हैं कि विटामिन D3 और B12 को हम कैसे कवर करें। देखिए विटामिन D3 को आज की डेट पे मैंने देखा हुआ बहुत सारे ज्ञानचंद बैठे हुए हैं जो आपको बताते हैं कि हम वेजिटेरियन से कवर करेंगे। प्रैक्टिकली दैट इज इम्पॉसिबल। दूसरा, उनका कहना है कि आप विटामिन डी को सूर्य से ले लोगे, सनलाइट से ले लोगे, ये इम्पॉसिबल है। मैं ओवर अ पीरियड ऑफ आज 22 साल प्रैक्टिस में देख चुका हूँ कि मैं कितना भी लोगों को बोलूं कि आप योगा करें, या पुराने समय में जो हम आयुर्वेद के हिसाब से बोलते थे ना कि लंगोट बांध के तेल लगा के हम सनलाइट में सुबह 6 बजे करते थे पूरे इसमें, जो आज की डेट पे कहीं से पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, इतना आप कर भी लेंगे तो उतना विटामिन डी नहीं बनता, समहाउ बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, because of exposure to something others and food quality, we are not able to achieve that sufficient level of vitamin D in our level। और इन सभी कंपोनेंट में आपके ऑस्टियोपोरोसिस में मेन कंपोनेंट में कहूंगा, विटामिन डी का लेवल यदि आपकी बॉडी में हाफ से ऊपर है, मतलब जो उसकी रेंज होती है, हम टेस्ट कराते हैं 30 से 100 के बीच में, यदि वो आप 60-70 पे मेंटेन करते हैं, आई कैन प्रॉमिस यू, यू आर इम्यूनोलॉजिकली सेफली लॉक्ड। आप इम्यूनोलॉजिकली बहुत ही सेफ है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा। एट द सेम मैनर आपको B12 को भी आपको कवर अप करके रखना चाहिए, जिसका लेवल आपको मिनिमम, यदि हम इसके लेवल की बात करें जो अराउंड 100 प्लस से अराउंड 200 से 900 के बीच में होता है, तो यू हैव टू बी समवेयर बिटवीन 500 के आसपास रहेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। इसके साथ ही जो एक सिंपल जो प्रिवेंशन के बारे में, जैसा कि ये सवाल आपने पूछा, उसमें आपका फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। और फूड में सिंपल कहूंगा कि आप रेगुलरली मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स, जो अपन मेवा कहते हैं, काजू बादाम किशमिश, इसको आप मिक्स कर लें और एक मुट्ठी जरूर खाएं। स्पेसिफिकली यदि आप वो नहीं कर सकते तो आपके पास चना, मूंगफली, राजमा, दालें हैं, इसको आप किसी न किसी फॉर्म में अपने डाइट में अपने इसमें मिक्स करिए। जैसे अर्ली मॉर्निंग आप इसे भिगा के खा लें, या शाम को जब यदि आप जैसे स्नैक्स ले रहे हैं तो वो स्नैक्स में आप इसको मिक्स करना शुरू करें। कोई भी दालें, जैसे इवन देखते हैं हम लोग, चना हल्का सा हम रोस्ट कर लें, सिंपल भिगा के खा लें, या फिर मसूर की दाल है, इस टाइप की किसी भी इसको आप एज ए स्नैक्स यूज करें, तो आप किसी किसी न फॉर्म में आप प्रोटीन की मात्रा अपने शरीर में बढ़ा रहे हैं। थोड़े थोड़े मात्रा में आप एक हाफ बॉल पनीर सौते कर सकते हैं, दैट विल एड यू प्रोटीन ऑल्सो एंड कैल्शियम। एंड किसी न किसी फॉर्म में आपको सोया मिल्क पोर्शन बढ़ा देना है। और सबसे अच्छा तरीका है, आप 2 से 3 ग्लास मिल्क यदि डेली ले लेते हैं किसी भी फॉर्म में, वेदर इट इज अ प्योर मिल्क और कर्ड, दैट इज द बेस्ट सोर्स फॉर योर प्रोटीन एंड कैल्शियम टू बी कवर्ड इन योर डेली रिक्वायरमेंट। तो ये जो एक बेसिक मैं नॉलेज दे रहा हूँ, और साथ ही इतना करने के साथ ही आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत होना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप कहते हैं कि आपने गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया, आप गाड़ी को चला ही नहीं रहे, तो ये तो बायोलॉजिकल चीज है, आप केवल कैलोरी डाल रहे हैं और स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। तो जब तक बोन को स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा, और वो स्टिमुलेशन सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सरसाइज के फॉर्म में मिलेगा, और वो एक्सरसाइज भी जब तक उसमें रेजिस्टेंस, प्रेशर या पावर नहीं लगेगा, तो बोन की इसमें कोई फायदा नहीं मिलना है। जैसे आपने नोट किया होगा, जो जिम जाते हैं जो लोग, जिम जाते हैं तो उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ क्यों आता है? बिकॉज जिम जाना एक प्रकार का बहुत विग्रस एक्सरसाइज है, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग। इसकी वजह से उनके बोन्स और मसल्स स्ट्रांग, तो स्ट्रांग मसल्स के लिए जो अपना एक बेस जो होता है, जो नींव होना चाहिए, जो कंक्रीट है, वो बोन का ही है। तो जब आप मसल्स बिल्डअप करेंगे तो बेस ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगा, बिकॉज दैट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो हमको किसी भी फॉर्म में आपको जो कसरत करने, एक्सरसाइज करने बोला जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सेफ जोन में जाके उसको अपने एक्सट्रीम लेवल पे जरूर करें। बिकॉज एक्सरसाइज यदि आप नहीं करेंगे तो जो आपको एडेड जो 20, 30, 40% का जो एडवांटेज मिलना है बोन बिल्डिंग का, मसल बिल्डिंग का, स्ट्रेंथ बिल्डिंग का, वो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि इसमें चारों कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, आपका न्यूट्रिशन, आपका फूड, और उसके बाद आपका स्टिमुलेशन जो एक्सरसाइज के फॉर्म में है, इतना बहुत इंपॉर्टेंट। सो ये तीनों कंपोनेंट यदि हम कवर कर लें तो डेफिनेटली हम ऑस्टियोपोरोसिस से बिल्कुल बच सकते हैं। और स्पेसिफिकली जो 35 से 50 की रेंज में जितने हैं, खासकर महिलाएं,
इनको बहुत जरूरी है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। घर के काम करने बस से आपको कोई स्ट्रेंथ नहीं मिलती है, कोई पावर नहीं मिलता है, याद रहे। क्योंकि जैसे हम प्रैक्टिस में बैठते हैं हॉस्पिटल में तो बोलते हैं सर मैं तो घर का काम करती हूँ। सो इन ए लाइटर नोट में उनको यही बोलता हूँ कि आप एक घर और पकड़ लीजिए करके, बिकॉज घर के काम से आप घर का काम पूरा कर रहे हैं, बट यू आर नॉट एक्चुअली डूइंग एनीथिंग फॉर योर बॉडी। सो बिल्कुल, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यदि आप जिम नहीं जा सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, तो मैं सिंपल कहूंगा जस्ट गो टू द हिंदू धर्म और आप सूर्य नमस्कार करना शुरू करें। और यदि पेयर ऑफ 12 जो हम कहते हैं 12 पेयर यदि आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, आई कैन प्रॉमिस यू आपको लाइफ टाइम कोई भी बोन्स और जॉइंट्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड दैट इज अ वेरी सिंपलेस्ट मेथड। सो दिस इज अ मीन्स बेसिकली अ नटशेल, आप अपने आप को ऑस्टियोपोरोसिस से कैसे बचा सकते हैं। एनी सर क्वेश्चंस मोर गुप्ता जी? कैटेगोरिकली सर आपने तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल से पूरा समझा है। सो मतलब हेड्स ऑफ टू, मतलब अपने लाइव एग्जाम्पल से आपने जो नटशेल में समझा है ऑस्टियोपोरोसिस, आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन, for जी me, for my family, for my mother, father, and parents. Yes, sir, it will be because we are listening you very calmly. You are giving good examples. So it is मतलब जो डेली हम लोग करते हैं, जो आपने सूर्य जी जी नमस्कार जी। बोला सर, मतलब लाइफ लॉन्ग एग्जाम्पल। सो एंड आपने एंड जितना इन भी फैक्ट क्वेरीज है ये आपने जो, उसको नटशेल में समझा है। इट्स जी दूसरा पार्ट इट्स मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा, दोज हु आर इन एक्चुअल रिस्क। जैसे क्या होता है ना, 50s के बाद में मैंने देखा हुआ है लोगों की एक्टिविटी काफी कंप्रोमाइज हो जाती है, एंड दे आर एक्सेप्टिंग देमसेल्फ कि अब मैं ओल्ड एज हो रहा हूँ, अब मेरे को क्या करना है, मैं तो सिर्फ वॉक करूंगा। जी नहीं। तो वॉकिंग के बारे में भी मैं इसमें ऐड करूंगा, दोज पीपल हु आर वॉकिंग स्टिल, कि मैं आधे घंटे 40 मिनट वॉक करके मेरी तो वॉकिंग एक्सरसाइज हो। इट इज जस्ट लाइक कि आप खाना खा रहे हो और सैलेड में आपने केवल कोई भी एक कंपोनेंट ले लिया, कि आपने केवल ककड़ी ले ली और आप रोज ककड़ी खा रहे हैं, सो इट इज नॉट गोइंग टू कवर इट अप। सो यू हैव टू मेक अ फ्रूट सैलेड काइंड ऑफ अ थिंग, मिक्स सैलेड होगा। एट द सेम मैनर आपकी एक्सरसाइज भी वैसी होनी चाहिए। वॉकिंग ओनली क्रिएट्स स्ट्रेस ऑन हील्स, स्ट्रेस ऑन लो बैक एंड मसल्स, बाकी कोई कंपोनेंट आपका उसमें कवर होता नहीं। यू आर एक्चुअली जस्ट ट्राइंग टू बर्न कैलोरीज, उसमें स्ट्रेंथनिंग नहीं होती। तो वॉकिंग आई वुड से इज अ वर्स्ट एक्सरसाइज दैट शुड ओनली बी थिंक ऑफ एक्टिविटी एज एक्सरसाइज आफ्टर 80 ईयर। 80 के बाद सोचना है हमको कि केवल वॉकिंग एक्सरसाइज करनी है। अदरवाइज मैं कहूंगा कि जितने लोग सुन रहे हैं या अभी भविष्य में इसको लेक्चर को सुनने वाले हैं, अभी आप केवल वॉकिंग कर रहे हैं तो कल से वॉकिंग बंद करें। यू स्टार्ट ट्राइंग जॉगिंग, एटलीस्ट वॉगिंग। जॉगिंग मीन्स यू आर ट्राइंग टू रन, वॉकिंग मीन्स अ फास्ट वॉकिंग, और अदर इट इफ नॉट डू ब्रिस्क वॉकिंग। ब्रिस्क वॉकिंग ऐसा फील करिए कि आपके पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है और आपको वो दौड़ाने वाला है, तो आप डर के मारे कितना तेजी से भागना शुरू करेंगे। दैट शुड बी देयर एटलीस्ट। अदरवाइज वॉकिंग ओनली फॉर 20 मिनट्स इज सफिशियंट फॉर योर मेंटल सेटिस्फेक्शन कि आप वॉकिंग कर लें, बट अदरवाइज मुझे नहीं लगता। इवन आई हैव ट्राइड दिस। So even when you're 40s or 50s or 60s, do something extra जिसमें आपको रोज ऐसा फील हो कि हाँ मेरे हाथों में थोड़ा सा एक सेंसेशन, व्हेन जो भी एक्सरसाइज करते हो फील करते हो कि जिस कंपोनेंट का हम एक्सरसाइज करते हैं, लेट से चेस्ट का या आर्म्स का या उसको, तो हमको उस दिन ना जब चलते हैं तो एक हैवीनेस, एक टाइटनेस फील होती है। दैट फीलिंग यू हैव टू मेंटेन थ्रू योर एक्टिविटी। आप उसमें कुछ भी एक्सरसाइज करें एंड स्लोली करिए, प्रॉपर ट्रेनिंग में करिए सब। आप एक गाइडेंस ले लें, आजकल यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं, यदि आप ढूंढेंगे तो आप बहुत अच्छे से ढूंढ पाएंगे। इफ नॉट, वी आर ऑल्सो रनिंग ए यूट्यूब चैनल, आप उस पर भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे नाम को ढूंढेंगे, वहां से आपको गूगल से कनेक्ट हो जाएंगे। सो आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू कंसिडर माई सेल्फ एज अ लाइफ स्टाइल कंसल्टेंट, जिसमें मैं फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए आप लोग को गाइड कर सकता हूँ। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन कनेक्ट मी टू ऑल्सो बियॉन्ड दिस मीटिंग। सो ये बेसिक चीज आप बिल्कुल फॉलो करें, एंड आई कैन प्रॉमिस, मैं इवन अपने जितने पेशेंट्स हैं या काउंसलिंग में मैं यही कहता हूँ कि यदि आप मेरी चीजें फॉलो करें और हमको यदि भगवान की दया से कोई ऐसी बीमारी नहीं हुई जो मतलब इससे रिलेटेड नहीं हो, लाइक कैंसर और समथिंग, देन आई कैन प्रॉमिस यू आप 80-85 की उम्र तक दौड़ते हुए जाएंगे। इन शॉर्ट मैं सीधा ये कहता हूँ कि आप दौड़ते हुए मरेंगे। हार्ट अटैक जब होगा तो कोई नहीं जानता कि कौन मर जाएगा, कब बचेगा, बट आप यदि एक्टिव रहेंगे तो ये मान के चलिए आपके जो टर्मिनल डेज होते हैं, जो बेड रिडन नहीं होने चाहिए, दैट इज एवरीवन्स टारगेट, कि कोई नहीं चाहता कि मैं बिस्तर पे लेट के मरूं। तो ये चीज यदि आप करेंगे तो बहुत, मैं नहीं सोचता कि आपको कहीं भी जरूरत पड़नी। सो दैट दैट प्रिपरेशन शुड स्टार्ट एट 50।
or at least 45. यदि आप आदत बना लेंगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी है. And that's why my motto is, because I am running two institutes, rather I would say three institutes. So one is my clinic where my primary motto is life is mobility, mobility is life. चलती का नाम जिंदगी. पहले बहुत बड़ी मूवी आई थी, हमने देखा था, जिसमें किशोर कुमार और तीनों भाई थे, अनूप कुमार और अशोक कुमार जी. चलती का नाम गाड़ी. तो वो गाड़ी को आप समझिए आपकी जिंदगी है. वो आप जितना चलेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, आप चलते ही रहेंगे, आपकी गाड़ी बंद नहीं होने वाली है. एंड द सेम थिंग, द नेक्स्ट इज माय इंस्टीट्यूट, दैट इज द बेस्ट ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, exclusively for orthopedics hospital we are having, where our motto is your mobility our priority. So आपको कुल मिला के मेरा जो उद्देश्य है, being an orthopedic surgeon, being a musculoskeletal surgeon, being a joint replacement surgeon and arthritis managing doctor, I would simply say आपको चलाना, आपको मोबाइल रखना, आपके मूवमेंट की जो पूरी जिम्मेदारी है, definitely it's mine. And third is definitely I'm a professor in medical college where I teach them always to be a very mobile, very active. So if you are mobile and active, you will absolutely have a normal life and your bones will automatically take care of, provided you are having a good nutrition. At the same time, if you are managing your good calcium, vitamins with consent of your doctor, then I can promise you a good health lifelong. Over to you, Gupta ji. Yeah, thanks, doctor, for your beautifully as a correlative thinking. Everyone is thinking what you were saying. Yes, चलते का नाम गाड़ी and mobility, everything has been correlating their personal life. And you rightly said कि हम लोग को exercise सिर्फ walking से नहीं, बाकी सब भी करना चाहिए. So thanks, doctor. As we conclude our session on osteoporosis, I want to thank everyone for the participation, and obviously the active engagement, I can say. Obviously, you already said osteoporosis is preventable and manageable with the right knowledge and proactive measures. So we encourage you to continue spreading awareness and supporting those at risk. And obviously, together we can make a significant impact of bone health and Definitely. quality of life. So stay informed and stay healthy. Thank you. And doctor, we will say कि it's not a one time. We'll take you once again, and maybe after the Yeah, 20, we'll do it 30 days. continue, because this is a one time, not a one time process. Even every aspect we can cover. So for Correct, being a correct. good health, for a treatment also, we will be continuing on this part. And if anyone comes for any kind of a queries at any point of a time, Yeah, it's most definitely, welcome. definitely, doctor. Thank you. So Thanks a thanks for lot. your opportunity. Thank you. Good day.